Very good morning, dear students. In our previous class, we have completed our two poems, Dust of Snow and Fire and Ice. Today, we are going to begin the second one prose, that is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom, it is an autobiography. It is an autobiography written by Nelson Mandela. And some part or an extract from that autobiography, has been taken here in your syllabus. Okay, and Nelson Mandela, I hope that you know better, or I suppose you know better about Nelson Mandela. Nelson Mandela, the first black president of America. First black president of South Africa. Okay, South Africa, as we know that there was a rule of white people. Apartheid system was there. Up to the end of 19th century. But what happened there at the last decade of 19th century, a non-racial government was established there. Means the blacks got victory over the whites, and the apartheid system was overruled, and democratic government was established. Non-racial government was established there in the last decade of 19th century. And the first president of that non-racial government, the democratic government of South Africa, was Nelson Mandela. And here in his autobiography, he talked about, as the name is given, Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom means this autobiography is about the journey and the struggle and efforts and the efforts made by and the sacrifices given by the black leaders, black people, to got freedom. So here in this extract, you will find a brief scenario, or a brief introduction, or a chota sa picture, a brief picture of the sacrifices black people had given to established non-racial government in South Africa. Okay, so this is a brief introduction of this extract, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Okay, as I told you, this is an autobiography written by Nelson Mandela, where he talked about the sacrifices, the efforts, the struggle, the various movements done by the black people to get freedom, independence from white people. Okay, so a little bit introduction of it is given there in the first page. Before that, look at the apartheid system. You must know, you might have studied it in political science or sociology, social studies. Okay, there you might have studied apartheid system. Okay, apartheid system. What is apartheid system? It is already given there in your textbook. Look at there before you read. In the introductory part of this, it is given apartheid system. What is apartheid system? Which was there in South Africa. Okay, South Africa में apartheid system था. तो देखो उसमें actually है क्या? Apartheid is a political system that separates people according to their race.
Look at it is in your book already. Underline it. Apartheid. Apartheid is what? Apartheid is a political system. एक political system है. Politics बोल सकते एक प्रकार का. Where people are divided और people और this system separates people. लोगों को separate करता है और people are divided on the basis of their race. अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनका जो रेस होता है, जात होती है, उसके आधार पे उनको डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. दैट सिस्टम इज कॉल्ड, और दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड अपार्थीड. ओके, एंड दिस वाज देयर इन साउथ अफ्रीका from the first decade of 19th century to the last decade of 19th century. Okay, so this is apartheid. You must know, okay, this system, and it will really help you to study political science also. Okay, political science में भी तुम्हें काम का ये है, या हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, या सोशियोलॉजी, कोई भी सिस्टम, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें भी काम का आएगा अपार्थीड सिस्टम. ओके, पॉलिटिकल सिस्टम. देन लुक एट देयर, यहाँ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. मंडेला बिकम्स, व्हेन नेल्सन मंडेला became the first प्रेसिडेंट ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. तो देखो उसका थोड़ा सा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा पार्ट यहाँ दिया हुआ है इन बॉक्स. लुक एट देयर इन द बॉक्स ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ सेकंड प्रोज. टाइटल इज देयर, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. लुक एट द टाइटल. Yes, so this title is actually talking about the inauguration. Means ये जो दिया हुआ है, inauguration जो प्रोग्राम हुआ था, जो सेरेमनी हुई थी, वहाँ ये जो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट करके जो शपथ लेने के लिए या फिर उस सेरेमनी में आए थे, तो उस बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. लुक एट द व्हाट इज गिवन. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज, means what the part which is given in the box is a news item. Okay, जो न्यूज़ आइटम पब्लिश हुआ था on 10th May 1994. ओके, 10th May 1994 में एक न्यूज़पेपर में आया था. तो उसका एक जो बोलते हैं ना न्यूज़ आइटम, जो न्यूज़ में पब्लिश हुआ था, वो यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए तुम्हें दिया गया है. अब देखो क्या दिया है उस न्यूज़ आइटम में. न्यूज़ में जो न्यूज़ पब्लिश हुई थी उसमें, नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. द टाइटल ऑफ दैट न्यूज़. देन लुक एट द इंफॉर्मेशन. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries of white rule. Look at in the very first line it is said, he became the first black president of South Africa after more than 3 centuries of white rule. मतलब वाइट जो पीपल थे वहाँ के, वाइट वाली जो रेस थी, इट हैड रूल्ड देयर इन साउथ अफ्रीका फॉर मोर देन 300 centuries. मोर देन 300 centuries. 300 साल से भी ज़्यादा सालों तक वहाँ वाइट लोगों का राज था. कहाँ? साउथ अफ्रीका में. Then in 1994, the non-racial government was established. Let's see. Mr. Mandela's African National Congress. जैसे हमारे इंडिया में भी कांग्रेस पार्टी थी, और महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में कैसे हम लोग ने भी ब्रिटिश लोगों से अपना छुटकारा पाकर अपनी इंडियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, उसी प्रकार से वहाँ नेल्सन मंडेला का भी एक ग्रुप, मतलब पार्टी थी. एंड व्हाट इज दैट? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, नेल्सन मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके, नेल्सन मंडेलाज. सो हियर पार्टी won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 252 सीट्स इन्होंने जीत कर लाई थी आउट ऑफ 400. किसके अंडर में, किसके नेतृत्व में? इन द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला.
and there was establishment of non-racial government. Okay. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. Today means 10th May 1994. 10th May 1994. A ceremony was organized there, and that ceremony was held. The ceremony was held in the Union Buildings Amphitheatre. Union Buildings Amphitheatre. Look at this question is asked in examination, where the inaugural ceremony was held or organized. So where it was in the Union Building, it was in the Union Building Amphitheatre in Pretoria. Pretoria, okay, the capital of South Africa. And it was attended by politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. And this inauguration, that inaugural ceremony was attended by politicians, dignitaries, बहुत सारे politicians आए थे, dignitaries आए थे from more than 140 countries around the world. more than 140 countries, मतलब 140 कंट्रियों से भी ज़्यादा कंट्रियों के पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज वहाँ पहुँचे थे to attend that inaugural ceremony. Yes, to witness the victory of blacks over whites. To witness the establishment of democracy or democratic government, non-racial government in South Africa. So look at that, what is given then. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. And being the first black president of South Africa, on that occasion, he addressed the audience. He addressed the audience who were present there, and in his address, he focused, or he prominently gave importance to the point that he mentioned in his address. And look at the very important keywords of his address. Keywords, especially it is better to say the keywords of his address, his speech delivered there on that occasion. And what are the keywords here? Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. Never, never again, मतलब इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा on this beautiful land or in this beautiful land. On this beautiful land, इस beautiful land पे देखो, beautiful land किसको कहा है उसने? The country South Africa. So here he says, on the land of South Africa, it will never happen again. क्या नहीं होगा? Means this land will never experience the oppression, suppression. Yes, ऑपरेशन किसी का, ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है वो वाला ऑपरेशन नहीं. ये ऑपरेशन कौन सा है? किसी की पीड़न करना, छेड़ करना, जो हम बोलते हैं ना कि लोगों को उनके ऊपर एक अत्याचार करना, एक प्रकार का ऑपरेशन, जिसे हम सप्रेशन भी कह सकते हैं. ओके, सो हियर दिस ऑपरेशन मीन्स अत्याचार would not be done by one on another. Never, never, it will never happen again on this beautiful land. The oppression of one by another. एक का अत्याचार दूसरे के द्वारा. It will never happen. Okay, these are the key words of his address. अपने एड्रेस जो उसने किया था, उस एड्रेस का ये की वर्ड्स है जो उसने यहाँ कहा है. मीन्स ही प्रॉमिस द कंट्रीमेन, उसके जो कंट्री के लोग थे उनको प्रॉमिस किया कि देयर वुड नॉट बी सच डिस्क्रिमिनेशन इन हिज कंट्री. उसकी कंट्री में दोबारा ऐसा कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. भले वाइट लोगों ने उन पर राज किया, इतने सालों से उनके ऊपर अत्याचार किया, बट ये वाइट के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे. इक्वल, बोथ विल बी इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे. सच ऑपरेशन वुड नॉट बी हैपन देयर दो इट इज वाइट और ब्लैक. फिर वो ब्लैक रहे या वाइट रहे, इट वुड नेवर हैपन.
So he promised the people of South Africa that it would never happen again. Then jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colors celebrating together. Look at that. And in that ceremony, jubilant, bhavya, adbhut scenes on the street of Pretoria वहाँ follow किए गए. Followed the ceremony with blacks. और ये जो ceremony हुई, there were blacks, whites and colors. अलग अलग कलर के लोग थे वहाँ पर. That means जैसे यहाँ वहाँ more than 140 countries के लोग वहाँ गए थे, डिग्निटरीज गए थे, पॉलिटिशियंस गए थे. सो इट इज़ एड्रेस टू दिस पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज. जो अलग अलग कंट्रीज से वहाँ जो लोग आए थे उनको एड्रेस करते हुए कहा गया है कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. और सारे के सारे साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट. एंड मोर देन 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. And on that occasion, उस occasion पे उस दिन more than 1 lakh South African men, women, children of all races danced together with joy. आनंद के साथ सबके सब मस्त डांस कर रहे थे. So this is the news item published in a newspaper on 10th May 1994 and it was published in BBC. Okay, BBC ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसमें ये पब्लिश हुआ था. So this is a little bit a news item which was about the inaugural ceremony. So from this you can get idea what the extract is about. Okay, so dear guys, the extract we will begin in our next video lecture. So bye bye, see you soon, keep watching my videos and enjoy.